Hey, what's happening? आवाज साफ आ रही है मेरी? Yeah, we're going to do conductivity of ionic solutions. Part 6, guys. Part 6. You should be able to see me right about now. What's up? Yeah, Electrochem काफी भारी chapter है. Trying to wrap up the most important ideas, right? I know JEE का exam pass में आ रहा है, and if you especially you're in 12th grade right now, or if you're giving the exam, for whatever reason in Jan, then yeah, time काफी कम है. So we will do this and maybe just one more session on this idea on electrochem. हम लोग PYQs करेंगे for the first part of electrochem, which is the whole Nernst equation and all of that, by this weekend on Sunday at 7 o'clock or 6:30. I think 6:30 p.m. on Sunday. The session already made. We'll do that. ठीक है? PYQs practice करेंगे. अगले Sunday we'll do this ionic वाली चीज. The reason why I have kept a separate session just for conductivity of ionic solutions is because JEE इस पे बहुत सवाल पूछता है. हमने 5 सेशंस किए थियोरी ऑन ऑल द अदर स्टफ एंड वी गोइंग टू 2 सेशंस ऑन दिस कंडक्टिव आयनिक सॉल्यूशन और कोलरॉश लॉ में अगला सेशन करेंगे ट्यूसडे को. इन दोनों पे बहुत सवाल आते हैं जेई में, व्हिच इज व्हाई इट्स अ सेपरेट सेशन. खैर, आर यू एबल टू सी मी एंड हियर मी क्लियरली? या एट लास्ट 30 सेकंड. ऑलराइट अरमान, व्हाट्स अप युवराज, बिहार का शेर अनिकेत रेक, व्हाट्स हैपनिंग? गुड इवनिंग एवरीबॉडी. सो जस्ट गिविंग यू अ बिट ऑफ रीजनिंग एज टू क्यों हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं और इस टाइम के साथ प्लान किया मैंने. We are going to do PYQs of this, the first part of electrochem, मतलब until just before ionic solutions. Yeah, ionic conductivity is just पहले वाला part. We are going to do this weekend. Next weekend we'll do that. And by 30th, we'll also start revision. पूरा JEE का, JEE main के लिए हम लोग पूरा revision करेंगे physical and organic chemistry का. Nitika has already started organic. I hope you guys are enjoying those sessions. ठीक है? All right, all cool. So homework questions. Yeah, here. किन्होंने जवाब दिया था? अरमान जी ने जवाब दिया था. ठीक है? Let's see how these questions went. I'll be honest with you, ये दोनों सवाल थोड़े से ट्रिकी थे, but खैर we'll go over them, don't worry. हम लोग साथ में we'll go over them. Salts of A, thank you so much for the attempt. I really appreciate it, Arman. That's very nice of you. So, अभी जल्दी से इसको solve करो people on this chat right now. If you've not done the homework, then इसको जल्दी देखो. Salts of A, atomic mass 15, B, atomic mass 27, and C, atomic mass 48, were electrolyzed using the same amount of charge. Same amount of charge मतलब they were connected in series. Right? It was found that when 4.5 gram of A was deposited, the mass of B and C were deposited were blah and blah. The valencies of A, B and C are what respectively? इसको कैसे किया जाए शुरू? How do you start this question? What's the approach? यहाँ पे कुछ options दिए. I'll just remove the options. For now, the options don't matter. Yeah, this is one of those questions where you can't hack your way through the options. It's a little difficult to do that. You can, but शुरुआत तो कहीं करनी पड़ेगी. What is the starting point? Can anyone tell me in the chat कि इसको शुरू कैसे करें? How do you start a question like this? What do you think? C. Sai Kiran is saying C 3 बार. Okay, all right. Sai, I will write your name again. C. We'll see if that's the right answer. Homework question, Arman. You already solved? Yes, Arman. आपने आंसर शायद दिया था D, right? Arman, you had given D as the answer, I think. We'll see. We will see. All right. But how do you guys solve it? Can you tell me the process, please? शेर भाई साहब, आप भी बोल रहे हैं D. Yes, आपने पूरा Arman, and your comment was here. See, I've put it over here. Your comment is right on top of my head. This side, right here. And that's your comment, dude. Thanks for that. Khair, what's the main idea here? Arey, I get it. I get what you're saying. W equal to ZIT. Thank you, Yuvraj ji. W equal to ZIT is great. W equal to ZIT. अब I हो गया constant. तो बचा क्या? W proportional to Z. And that gives me Faraday's second law, which is WA by WB is ZA by ZB. इसके बाद तो life simple है. Thank you for giving me your answers. Can you also tell me how you have done this, Mr. Sher and Saurabh ji, as well as Arman? आपने कैसे किया? Did you solve it like this or did you do something else? आपने यही किया या कुछ और किया? जाहिर है यही किया होगा. But I feel that the answer may not be D. I am telling you, giving you a bit of a cautionary tale, right? May not be D. देखो, WA by WB. मैंने लिख दिया 4.5 by 2.7. यहां पे दिया है, कहां है A? 4.5 2.7. ओके. ZA, what is Z का definition, by the way? Z का definition is atomic mass divided by n factor into 96,500. But ये since ये cancel हुआ था इसलिए मैंने इसको हटा दिया है. This 96,500 it goes away, right? So that's okay, it doesn't matter. इसको हटा देते हैं. ठीक है, cool. So this is why I've written 15 by A. A is what? A is the valency. A, B, C are all valencies of the elements.
हाँ, यही यही किया। हाँ अक्ष जी, जरूर देखिए, नीट वाले देखिए, जेई वाले देखिए, आईआईटी वाले देखिए, जो भी टेस्ट दे रहे देखो, लाइफ में तो सेम ही सवाल आएंगे, राइट। सी जेई एंड नीट द कॉन्सेप्ट आर सेम, बस सवाल का लेवल थोड़ा अलग होता है। बाय लेवल आई मीन व्हाट इज बीइंग टेस्टेड इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, दैट्स ऑल। खैर एनीवे, यस आकाश बायजूस जेई चैनल है। व्हाट? this is the JEE channel, guys. Am I teaching on NEET channel by mistake today? No, not by mistake. I just did a NEET session just before this. This is a JEE session. Guys, don't mess with me. आप लोग बहुत टाइम पास कर रहे हो लाइफ में. दिस इज द जेई चैनल फॉर श्योर. यही किया, फिर आंसर डी कैसे आया? देखो 15 by A और 27 by B है. So and I get this right here, right? You simplify both of these things. What do you get? B by A is 10 into 0.3. Do you get this? देखो B goes on top, A गया था नीचे. 15 और ये जाता है. This goes once, this goes 0.3 times. This goes once, this goes 0.1 times. 0.1 मतलब ऊपर चला गया 10. So 10 into 0.3. So did you get the same thing that B by A is 10 into 0.3? Similarly, here I will get C by A is 0.3 by 2. How 0.3 by 2? Same idea. This goes once, this goes 0.3 times. This goes once, this goes 0.2 times. Right? So, in using both of these ideas, इन दोनों equations को मैं use करके I can form two relationships. Right? These two relationships. Okay? Yeah, Niket, C है, absolutely. But C कैसे है? Now, this is the beautiful thing about this. Just simple math से यहां से हो जाएगा. What do I do? I assume कि A is 1. Let me assume. क्या फर्क पड़ता है? It will get fixed. Don't worry. I'll assume A is 1. अगर मैं assume करूं तो A 1 है, then B is 3. Nice. But C is 3 by 2. अरे, C is 3 by 2 is not good. So we'll multiply everything with 2. I'm just taking LCM यार, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं. Just multiply everything with 2. Then I get 2, 6 and 3, which is the answer. Simple. Okay? धीरे से करने वाली चीज थी. Just आराम से. And I feel that this is a question that possibly could come in JEE Advanced. JEE Main में ये सवाल आने के chances भी आ सकता है. JEE Main में आ सकता है, but more of a JEE Advanced kind of question. ठीक है? Yes, Yuvraj. B, A, B and C. 2, 6 and 3. Do you see how it is 2, 6 and 3? Arman, do you see how it's 2, 6 and 3? Not 3, 1 and 2? Arman, do you see that? And everybody else who said D? Yes, Yuvraj. Absolutely right. Atomic mass by n factor into 96,700. That's the right thing. Arman, it's a very good try. बट आई थिंक जल्दी में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, राइट? बिकॉज नंबर्स वही है 3 1 2 1 2 3 3 1 6. शो ऑप्शन. अरमान ऑप्शन देख लें. ऑप्शन आर नॉट इंपॉर्टेंट. ऑप्शन आर नॉट इंपॉर्टेंट. अरमान क्वेश्चन आपने सॉल्व किया. लुक एट द वे दिस क्वेश्चन सॉल्व. आर यू कन्विंस्ड दैट दिस इज द राइट वे टू सॉल्व इट? ऑप्शन यार देखा जाए, प्रोसेस जरूरी है. ठीक है, ऑप्शन दिखा दूंगा, चलता है. युवराज कौन सी बुक से सवाल है? इट्स अ गुड क्वेश्चन. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. आई विल फाइंड आउट and get back to you. This is not a question that I have made. Yeah, this was on the curated material. So some questions I pick from good books. Some questions have been given by my amazing team that is there. You know, हमारी army, content army. This is one of those questions. I'll get back to you. I'll ask around. ठीक है. Arman, do you follow? ये कैसे किया हमने? I understand you solved it. You got a different answer. It happens. Life में कभी कभी होता है. But make sure you follow the process. Okay? ये दो expressions जो मिले, उसके बाद you write this down. You assume that it's equal to 1. If you assume 1, then you get two different values, and then you just multiply with, you know, like get it all to whole numbers. You don't need fractions, right? N factors as a fraction, I know it works, but valency हम लोग पूछ रहे हैं, n factor नहीं पूछ रहे, valency पूछ रहे हैं, right? This is why we've done this multiplication bit. So the answer is option C. All right. That's the problem. जल्दी में हो जाती है गड़बड़ी, right? जल्दी में क्या, इसलिए आपको ये मिला D, but right answer is C. ध्यान से करने वाली चीज है. What about this one? This is also a very interesting question. Yeah, I don't think shortcuts work in this one. Well, it does if you know what's going on. In the electrolysis of aqueous Na, अरे नहीं, sorry नहीं यार. It's okay. Process पे focus करो. In the electrolysis of aqueous NaCl, 4 moles of H2 were evolved along with 0.5 moles of O2. Find the mass of chlorine liberated. देखो यार, हम लोग 10 मिनट लगा रहे हैं होमवर्क क्वेश्चन में. कर लिया करो होमवर्क. तुम्हारी लाइफ. I'll have more time to teach you more things. If you have me discuss homework questions here, ठीक है भाई. Your call. Time तो वही लगेगा. Time की हमारे पास, you know, we have a fixed time that we have to spend with you guys. So there's that. Aksh, yes. आंसर बताइए, इसमें क्या करोगे? So NaCl है, but something weird is happening. यहां बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन निकला, क्लोरीन निकला और ऑक्सीजन निकला. तीनों निकल गए. That's interesting. How तीनों कैसे निकल गए? यार, I've been teaching you कि ओवर पोटेंशियल का आइडिया होता है. तो क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच में क्लोरीन निकलेगा,
ऑक्सीजन नहीं निकलेगा. You remember last session में we said this is minus 1.23 volts, minus 1.36 volts. मुझे सब याद नहीं, I just saw it before the session, right? So this should go, but doesn't because of over voltage, right? Over voltage, over या फिर over potential, जो ही बोलना चाहो. Kinetically it's not feasible, hence chlorine गैस निकलती है. But in reality it looks like थोड़ा ऑक्सीजन भी निकल जाता है, and that is the key to solving this question. A little bit of oxygen also gets out of the picture. Okay, theoretically it should not, but थोड़ा सा आ जाता है. Practical चीजों में things are what they are. Yes, Arman, I remember you saying 141.8, but वो भी आपने शायद जल्दी में किया. Let me tell you guys how to solve this. So the main idea is, देखो NaCl तो है ही, right, giving you Na plus and Cl minus. But anode and cathode reactions that I have taught you in the last class are this. क्यों? क्योंकि this takes preference over oxygen, right? Because they are competing reactions. कौन से competing reactions हैं? Competing with water. Okay, पानी के giving you पानी getting oxidized, पानी getting reduced. So I am telling you that okay, एनोड पे तो यही होगा, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होगा एंड नॉट ऑक्सीजन इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग थियोरेटिकली. कैथोड में डेफिनेटली होगा बिकॉज रिमेंबर इसका Na प्लस का दिस थिंग बिकमिंग Na is some 2.73 volts and that's not going to happen, right? Negative 2.73 volts, right? So बहुत ज्यादा हो रहा है, तो this is what will happen. But what actually happens is कि एनोड में ये भी आ जाते हैं भाई साहब, थोड़ा सा ऑक्सीजन भी निकलता है बिकॉज गिवन इन द क्वेश्चन यार, इट्स नॉट मी सेइंग इट, क्वेश्चन में दिया हुआ है. यस अरमान, डू यू सी दिस? या हाइड्रोजन तो ठीक है बट क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों निकलते हैं. अरमान इज सेइंग समथिंग. ओके, वी विल गेट बैक टू दैट. गुड, एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट अरमान, गुड जॉब. 4 mole of hydrogen require 8 mole of electron. Is that what you're saying? I can't follow the math. Thanks. अरे इतना टाइम मत कर भाई, सुन, तुम रुक तो एक स्टेप स्किप कर दिया. अरमान, that's great. It's lovely to see so much enthusiasm. But does everybody else follow what is going on? क्यों मैंने यहां पे लिखा है कि ये इक्वेशन भी होती है? This also, along with this, एनोड पे ये भी होता है बिकॉज सवाल में दिया है. थियोरेटिकली इट शुड नॉट कम आउट बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज, नॉट थियोरेटिकली, मतलब हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं, बट इस सवाल में दिया है, निकल रहा है. तो you've got oxygen and you've got chlorine. But now this is where the redox ideas come into the picture. Both oxygen and chlorine का हो रहा है oxidation, right? Because of oxidation happens. Reduction वाला process में hydrogen निकल रहा है. They both these processes have to be equal. Okay, that's the idea I'm going to take here. So 4 mole of water, 4 mole of H2 require 8 mole of electrons. अब यही 8 mole of electrons will be released from the oxidation half cells. कहां से? यहां से और यहां से. ओके, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन. देखो 1 मोल ऑक्सीजन में है 4 मोल इलेक्ट्रॉन. ओके, तो हाफ मोल में होंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स. आर वी गुड सो फार? अब बचे कितने? 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नाउ दिस इज रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन. सो बचे कितने? 6 moles remain for oxidation because total oxidation should be equal to total reduction. Do you guys follow this? Answer is 3. 3 moles. Yes, Sai, 3 moles. But mass निकालना था. You are absolutely right. 3 moles is answer. Excellent work, Sai. I missed what was being typed so far. आपने retract कर लिया. I think I can see what you retracted. No, I don't have superpowers. I can't see what you retracted. Arman, do you follow what's going on? It's 3 moles and not 2 moles. We'll get to 3 moles and 2 moles. But do you follow ये यहाँ पे क्या हुआ? Why is it that I am saying that both of these reactions happen at oxidation? Do you follow this? ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं? 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के लिए, बट ठीक है, वो 8 मोल्स में से 2 मोल जा रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, बाकी बचे 6 मोल. 2 मोल से निकलता है 1 मोल गैस, राइट? सी हियर द रेशियो हियर. 2 moles gives you 1 mole of gas. So 6 moles will give you 3 moles of gas, which is 213 gram. Is it okay? Hey, Sai, bro, क्या कैलकुलेशन है ये? सब कुछ सही, but you multiply 35.5. Multiply with 71 यार. Cl2 का मास क्या होगा? 35.5 into 2 ना. देखो, कोई जल्दी नहीं है लाइफ में. I know on YouTube everyone's in a hurry saying अरे ये तुरंत करते हैं, वो करते हैं. हमारे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है. जेई में कोई जल्दी नहीं है, आराम से करने वाली चीज है. सही करना जरूरी है.
It's important that you get questions right. Time is not a factor. It's not. Time का अलग सीन है. Time के लिए you practice hundreds of questions, that's fine. But when you're on an exam, be careful. ठीक है? Yes, great. But you got a different answer, Arman. इसलिए बोल रहा थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा. Yes, Sai. 213 is the answer. 213 is the answer. 35.5 into 271 into 3, 213. Are we good? ठीक है? चलो शुरू करते हैं आज का सेशन. फाइनली 15 मिनट बाद होमवर्क करने के. I don't mind. It's okay. Does anybody have any doubt in this question? How I've solved it, what I've done? It's important. This will help you solve any JEE advanced level question from Faraday's laws. We are done with Faraday's laws completely. एक दो छोटी चीज और बची है. Yeah? Any doubts in this, folks? Please let me know if you have any doubts. Then we'll move on. अगर डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं. और फिर हमको कंडक्टर वाला आइडिया भी शुरू. स्पीड एंड एक्यूरेसी इज द की. यस, बट स्पीड से भी ज्यादा एक्यूरेसी. युवराज भाई साहब, स्पीड इज गुड. स्पीड कम्स विद एक्यूरेसी. एक्यूरेसी सबसे जरूरी है. स्पीड हो जाएगा. देयर वाज अ गाय हु वाज मेरे साथ कोचिंग क्लास में थे. उनका नाम भी आदित्य था. दिस वन आदित्य हियर आल्सो, आई थिंक. आदित्य विद 2 A's. एंड ही वाज अ हॉकी प्लेयर, स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर. और वो इतना आराम से करता था, हर चीज स्टेप बाय स्टेप करता था. भाई साहब गए, ऑब्वियसली इवेंट टू आईआईटी दिल्ली, राइट? आई एम गिविंग यू स्पॉइलर अलर्ट राइट नाउ. और हम लोग जल्दी में यही करते जो आप लोग कर रहे हो, यही करते थे, जल्दी जल्दी आंसर दे देते. वो भाई साहब आराम से करते थे. वो हर फिजिक्स टेस्ट में 60 में से 50 लाते थे. हम लोग लाते थे 10, 5, 12. ये मेरे मार्क्स आते थे. उसके आते थे 50 out of 65. स्पीड डज नॉट मैटर. एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट. आई एम गेटिंग टू द पॉइंट. ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. ऑल राइट. For how long does a current of 2 ampere have to be passed through a solution of AgNO3 to coat a metal surface of 80 centimeter square with 5 micrometer thick layer? ये वाला you can do with very basic ideas of everything you've done so far. कुछ नई चीज नहीं है. Volume, density, mass निकालो, ZIT डालो, करो. I have told you what to do. Please try this question. Hey Agam, no tension, करिए सवाल. अरे वाह अरमान, फुटबॉल खेलते हो? बढ़िया, बढ़िया. Make sure you don't get injured, huh? प्लीज आराम से करो चीजें. ये बहुत जरूरी है. खेलो जितना खेलना है. खेलना द बेस्ट थिंग यार. एंड ऑल द कॉलेजेस यू आर एमिंग फॉर, दे हैव ब्यूटीफुल ग्राउंड्स. इतना और टीम्स होती है, बहुत मजा आता है. कॉलेज में फेस्ट में, कॉलेज में टीम्स में बहुत मजा आता है. ग्रेट, लवली. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन आउट गाइस. हॉकी में बहुत चोट लगी, उसी से समझ में आया कि भाई पैर में बहुत ज्यादा लगता है. Because more than the ball, because the hockey sticks. Because everybody in the pretext of playing सीधे पैर पे मार पड़ती है. अरे भाई हॉकी तो नहीं, हम लोग खेलते थे सिंपल चीजें लाइक बास्केटबॉल. वो भाई साहब हॉकी प्लेयर थे. वेरी 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 सॉफ्ट स्पोकन गाय. आई डोंट नो वेरी दैट. आई थिंक आई विल ट्राई कनेक्टिंग विद हिम नाउ. यू आर अ चेस प्लेयर, दैट्स ब्यूटीफुल युवराज. ओह वाओ, दैट्स क्रेजी. सो अगेन आई थिंक आईआईटीज में इंटर हॉस्टल चेस टूर्नामेंट्स होते हैं बाय द वे. लुक फॉरवर्ड टू दैट. या टी इज 35.7. ओके अरमान, T is 35.7. ठीक है, बाकी लोग ट्राई करते हैं. सो या दे आर इंटर हॉस्टल. एक हॉस्टल और दूसरे हॉस्टल के बीच में बहुत राइवलरी होती है. अगेन दिस इज फ्रॉम एनेक्डोट फ्रॉम अ फ्रेंड हु वाज एट रियली. एंड यू हैव दीस चेस थिंग एंड एनीबॉडी कैन टेक पार्ट. फर्स्ट ईयर्स कैन प्ले अगेंस्ट फोर्थ ईयर्स. कोई टेंशन नहीं है, मजा आएगा. ट्राई करो इसको दोस्तों. नाइस मैन, यू गाइस हैव ऑल दीस अमेजिंग हॉबीज. ग्रेट टू नो. सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, मैंने शॉर्ट में बता दिया था, राइट? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया, थिकनेस इज 5 माइक्रोमीटर. दोनों को मल्टीप्लाई करो, मिल गया वॉल्यूम. डेंसिटी है, डेंसिटी वॉल्यूम गिव यू मास. मास इज व्हाट? ZIT. हो गया ना सवाल. Z तो निकाल लोगे. नहीं, Z तो निकालना है. Z इज व्हाट? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी. वैलेंसी 1 है. 96,500 है डिनोमिनेटर में. 108 लिखा है यहाँ पे, वही 108 है. कैंसिल बहुत चीजें हो जाएंगी. मतलब कि द आंसर इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. एक्चुअली द आंसर इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. अभी टारगेट IIT, यस, उसके बाद फुटबॉल खेलना. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. ये अच्छा टारगेट है. मुझे जाना है IIT के म्यूजिक टीम में, ड्रामा टीम में, फुटबॉल टीम में. दिस इज अ लवली गोल. आई लाइक दिस गोल. Agam is saying 35.74. Yug is saying, Yug, what's happening? Yug, I don't think I've seen you here before. 1.9. Agam is also saying 35. All right. Lavanya, hey, Lavanya's from the NEET channel. Beautiful. Aksh is saying 1.8. मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ तो गड़बड़ी की है नंबर्स में. ये देखो माइक्रोमीटर लिखा है. माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में. ठीक है, इसलिए वो 1.9 1.8 नहीं आएगा. इट विल बी 190. दैट विल बी द आंसर. 190 के आसपास होगा आंसर. और चलो देखते हैं. हियर इज माय अमेजिंग डायग्राम ऑफ दिस शीट दैट इज कोटेड. ठीक है,
ये है 5 माइक्रोमीटर, वो है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना हो गया, यहां है सबसे जरूरी चीज, लिटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू बॉस राइट दिस डाउन। माइक्रोमीटर यानी 10 पावर -6 मीटर विच इज इक्वल टू 10 पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही मैंने है लिखा यहां पे। डू यू फॉलो दिस? कोई डाउट है यहां पे? प्लीज देख लो ध्यान से। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। व्हाई डिड आई कन्वर्ट टू सेंटीमीटर? बिकॉज डेंसिटी इज गिवन एज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मास क्या है, ये है। कुछ मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आई विल कीप इट एज इट इज, दैट्स अनदर थिंग। ये जरूरी चीज है। अगेन दिस इज जस्ट बुक कीपिंग, गुड बुक कीपिंग। टेक केयर ऑफ यूनिट्स, टेक केयर ऑफ यू। हर चीज एक्सपोनेंट्स और लास्ट में करना, एक्सपोनेंट्स में ही गड़बड़ी होती है, एक्सपोनेंट्स लास्ट में करना। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू टेक दिस टू द अदर साइड। हाँ, मैंने एक झोलमाल किया यहाँ पे। 8 into 5 is 40। ठीक है, तो 40 is 4 into 10 power 1। बेसिकली ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 into 10 power -2। दैट्स व्हाट आई हैव डन हियर। डोंट गेट स्कैर्ड बाय ये क्या हो, 8 into 5 कैसे हो गया, यहीं पे लिखा है। नाउ Z, ZIT, Z कैसे लिखेंगे? 108/1 बिकॉज 1 is the valency. How do I know 1 is the valency? सिल्वर की होती है, but it's also given to you, AgNO3, this is Ag plus, right, becoming Ag. So valency is equal to 1. Okay, ठीक है, 967,500। तो देखो भाई सब चीज हो गई कैंसिल, ये 2 और 2 हो गया, 2 यहां पे बन गया है ना। और क्या क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया 0.1, और क्या बचा। सो बेसिकली इट इज 2 into 96,000, नो एक्चुअली 96.5 है ना, क्योंकि यू हैव गॉट 3 zeros हियर, ये 3 0 यहां पे कट जाते हैं। दिस इज द आंसर, 193 सेकेंड्स। अरे साई 189 कैसे यार, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? 193 होगा ना? यस युवराज, अरे थैंक यू युवराज, लाज मचा ली तुमने। इट्स ओके, मिस्टेक होती रहती है। ओके, नाउ एक्सप्लेन टू मी गाइस, हाउ इज इट 1.89 ऑल? कैसे, लाइक क्या किया आपने? व्हाट डिड यू डू टू गेट 1.8 1.7? नाउ एक्सप्लेन टू मी प्लीज। आई एम ऑनेस्टली आस्किंग, मैं तुम लोग का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, नॉट पुलिंग अ लेग एनीथिंग। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सो आई कैन हेल्प यू फिक्स इट, दैट्स माय गोल। आई एम कमिंग फ्रॉम दैट वे कि जो भी अभी हुआ वी विल मेक श्योर कि वो फिर से ना हो। ठीक है, हाउ डिड यू गेट 1.8 1.7? युग, फर्स्ट यू, अरे युग, बट यू सेड 1.9, हाउ इज दैट फर्स्ट? बीइंग फर्स्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी है। गुड एफर्ट, बट ध्यान से करो, एक्सपेरिमेंट्स में गड़बड़ी की। 193 इज द आंसर। हाँ लावण्या, यस एब्सोल्युटली, मिस्टेक होता रहता है, इट्स ओके। साई, हाउ डिड यू गेट 189? कुछ अप्रॉक्सीमेट किया क्या यार? यहां पर अप्रॉक्सीमेट मत करो या। एनीवे, if you have doubts, you want to chat, please ping me on I Teach Chem and we can continue discussions on these ideas as well. Okay, Discord, let's start talking about what is a conductor and all of that, right? And multiplied by 100. वाह, ये सही है, multiplied by 100 हम भूल गए थे। सही है, it's okay लावण्या, होता है, no problem. All right Shankar, all G, all good. So the main difference between electrolytic conductors and regular conductors is कि charge are carriers of, चार्ज कैरियर्स आयंस, यहां पे होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन, इनसाइड द होल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आयंस करते हैं मूव। इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन्स गेट अब्सॉर्ब्ड राइट अवे, सो दे आर नॉट चार्ज कैरियर्स। ओके, एंड देयर आर नो केमिकल चेंज ऑब्वियसली हियर decomposition of electrolyte takes place in electrolytic conductors, and this seems kind of obvious, but obviously there's a mass transfer, there's an actual physical thing moving around, right? Physical thing, because there's a chemical reaction happening, electrolysis होता है, इसकी वजह से मास ट्रांसफर होता है। मास ट्रांसफर नहीं मतलब मास डिपॉजिट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज बिकॉज़ ऑफ कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज़ ऑफ कोलिजन ऑफ आयंस विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड इंटरआयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये थोड़ी सी बाल की खाल उदाहरण है, बट इन केस सम थ्योरी थिंग्स कम, दैट्स व्हाट दिस इज देयर फॉर। ओके, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग एंड वीक। हम लोग ये स्ट्रांग वीक करेंगे अगले सेशन में, व्हेन वी डू कोलरॉश लॉ। राइट नाउ वी गोना फोकस ऑन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स प्राइमरीली। ओके, सॉल्वेंट विस्कोसिटी, टेंपरेचर, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। Here it depends on this, ये तो मालूम है तुमको ना, R is rho L by A. You have mugged this 100 times, 100 बार एटलीस्ट मग किया होगा इसको, यही चीज जरूरी है। This is the only thing we're going to focus on इस सेशन के नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए, 36 मिनट के लिए we're going to focus just on this. Trust me, just on this. 36 मिनट, कितना टाइम बाकी है ना? गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, कितना टाइम हुआ शंकर? We started at 8:30. A good conductor is something, that's a difficult question you asked me actually. A good conductor is something that, okay, that's a good question. I'm not going to take it away. So, that's a very good question actually. Something that transfers heat very quickly is a good conductor of heat. Something that does not transfer heat is a bad conductor of heat.
Similarly, something that transfers electricity is good conductor, does not is bad conductor. मतलब अगर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, हीट की बात करते हैं, एक मिनट के लिए हीट की बात करते हैं. इफ आई टच समथिंग दैट इज वुडन एंड आई टच समथिंग दैट इज मेटल, द मेटल सीम्स कोल्डर बिकॉज मेटल का हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है. ओके, इट इज अ गुड कंडक्टर एंड द वुड इज अ बैड कंडक्टर, इसलिए इट डजंट. Now, I would not ask you to drop parallels and go put your hand inside a socket and say, what is a conductor? ये सब नहीं करना है. But same idea, right? A good conductor is something that lets electricity pass through it, which means कि अगर एक तरफ electricity दूसरी तरफ बहुत जल्दी पहुंच जाती है. Electricity मतलब electrons and ions over here. Bad conductor something doesn't. Okay, cool. So, interestingly, this is very, very fascinating. Temperature बढ़ाओ in metallic conductors, the electrolytic conduction decreases. Okay, exponentially decrease करता है. Electrolytic conductors में it increases. It increases. Now this is fascinating and what sets things apart. Temperature बढ़ाओ, बढ़ जाएगा electrolytic conductance. Let's talk about resistance now. Okay, rho L by A, R rho L by A, etc. वो तो already बता चुका आपको. What is that R rho L by A? Cross sectional area. This is the metallic conductor. Obviously यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है. Cross sectional area है, length है, and all of that. So it's directly proportional to length, inversely proportional to area. मतलब कि थिंक अबाउट वाटर फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब, राइट? अगर ट्यूब का एरिया बढ़ा दोगे तो आराम से वाटर फ्लो करेगा, राइट? एरिया गुड. अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो वाटर विल आई हैव टू कवर मोर डिस्टेंस, लॉन्गर डिस्टेंस. सेम चीज, पानी का फ्लो इज द सेम. पानी क्यों फ्लो होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से. करंट क्यों फ्लो होता है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्टेज. करंट का फ्लो करना, पानी का फ्लो करना, दीज आर द वेज यू कैन काइंड अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो खैर इतनी कहानी की वजह, ये तो मालूम है ना फिजिक्स से आइडिया है. एनीबडी हैज डाउट्स इन दिस? Is this okay? What's on my screen? Is this okay? Any doubts on this? Yes, yes, exactly. Yuvraj, cell constant, etc. Simple 10th का टॉपिक है, आसान चीजें. Absolutely. All right. Yeah, absolutely. All of you are absolutely right. सही है, simple आसान चीजें. Everyone's familiar with this expression, right? ये जो मैंने equation लिखी है, R equal to rho L by. This here is a property of the material known as resistivity या फिर specific resistance. ये शब्द जरूरी है. Specific रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी. मन दिस, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ओके, ठीक है, कूल. दिस राइट हियर इज अ सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट मतलब कि भाई देखो, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर अगर मैंने एक सेल ले ली, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, उसका लेंथ सेम है, तो दिस इज द सेल कांस्टेंट. ओके, ऑल्सो नोन एज G स्टार. ओके, L is the separation between electrodes. What electrodes? दो इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में डिस्टेंस. मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा आयॉन्स को. ठीक है. A is the overlapping area of cross section of electrodes dipped in solution. मतलब अच्छा, इसको मैंने डिप किया, ये एरिया क्या है? This area is what we're talking about. ठीक है. Showing the same thing over here. दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, एंड ये एरिया फॉर गैसेस. या दिस इज द same idea for gases as well. Liquids and gases, everything is the same. Cool. So resistivity is defined. अगर मैंने some L लिया 1 centimeter and area is 1 centimeter square. Notice that I am saying centimeter and not meters because obviously you're not going to have 1 meter का like distance between stuff. 1 meter is very big thing. इसीलिए we talk about centimeter here. Although I know the SI unit is still meter, but we are going to talk about all units in terms of centimeter. This is the reason. Okay. You got 200 mock tests. अरे यार, that's okay. लोग करते हैं. दुनिया, भगवान ने दो कान किस लिए दिए अरमान? एक कान सुनो, दूसरे से निकालो. फोकस ऑन yourself. It's always you versus you. There are people, you've got to surround yourself with people who encourage you. That's the one funda in life. Okay, there'll be a lot of people who are saying a lot of random things. सबको इग्नोर करो. भगवान है ना, भगवान नाम लो, आगे बढ़ो. ठीक है. What you do is you focus, you know, and do what you like. और अच्छे से करो, एफर्ट लगाते रहो. Resistivity is defined as resistance of the solution between the two electrodes of 1 centimeter square area cross section and 1 centimeter apart. थोड़ा definition है, let's get down to that. What is the unit of resistivity? Unit है ohm centimeter. How did I get ohm centimeter? R equal to rho L by A. ठीक है, ये है ohm, ये है centimeter inverse, right? तो ये चला जाता है दूसरी तरफ, तो rho will have the units of ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर. ठीक है, वी आर ओके. नमस्ते निधि जी, कैसी हैं? एक से सुनो, दूसरे निकालो. एग्जैक्टली युवराज, एब्सोल्युटली. क्यों भाई, फ्लेक्स कर रहा है, उसको 200 मार्क्स मिले, मेरे 200 मार्क्स मैं भी फ्लेक्स करता. तुमने मेरा सेशन नहीं कल अटेंड किया,
मैं 3 बुक्स फ्लेक्स कर रहा था, अभी नहीं उठाऊंगा, माय नेक इज रियली बैड, मैं फिर से फ्लेक्स करने वाला था। आई हैव ग्रेट बुक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई विल फ्लेक्स दैट, ही गॉट अ गुड स्कोर, ही इज फ्लेक्सिंग, करने दो ह्यूमन, तुम भी करो फ्लेक्स, क्या फर्क पड़ता है। हेलो, सो 1 ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर के बीच में रिलेशनशिप क्या है? द सेम रिलेशनशिप दैट इज देयर बिटवीन दिस एंड दिस। द रीजन व्हाई आई स्पेंड सो मच टाइम ऑन द बेसिक्स इज बिकॉज इसी के बेसिस पे आप लोग जेईई एडवांस क्लियर करोगे, ठीक है। रट्टा मारने से नहीं होने वाला जेईई एडवांस, जेईई मेन काफी हद तक हो सकता है, विच इज ग्रेट, बट उसके लिए भी बेसिक्स चाहिए, ठीक है। एंड सिमिलरली ये हो जाएगा इनवर्ट थिंग। बी केयरफुल अबाउट यूनिट्स, यूनिट्स बहुत ज्यादा जरूरी है इन आयोनिक कंडक्टेंस एंड ऑल ऑफ दैट। खैर, नाउ मुद्दे की बात, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि R was rho L by A, conductance is G, which is going to be equal to 1 by rho into 1 by G star. Okay, what is G star? G star is L by A. Do you see this? Are you okay with this expression जो मैंने यहां पे लिखा है या नहीं? Are you okay? Are you not okay? If you're not okay, थोड़ा सा लिख लो यार, लिख के प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा ठीक, ठीक है। सीजीएस में ओम सेंटीमीटर्स, यस। प्रिवेंशन ऑफ करोजन, शंकर ये हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, आई विल बी वेरी अपफ्रंट विद यू, एनसीईआरटी में पढ़ लो यार, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन बाय 30th ऑफ नवंबर, एंड एज मच एज आई लाइक टू टीच यू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज आप लोग का जेईई बहुत आपके दोस्तों का अभी आ रहा है 1 महीने के अंदर, सो आई एम फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट आर टेस्टेड द मोस्ट, और जो चीजें आपको मुश्किल होती है, ठीक है। अरे वाह, 199 होता है ह्यूमन, इट्स ओके, इट्स ओके। आईआईटी बॉम्बे, आई लाइक इट। So G is conductance, okay, given by 1 by R, etc., A by L rho, or G into G star is equal to 1 by rho. You see that? What is G star? G star is L by A, which is the same as cell constant. You see that? G into G star is 1 by rho. You see that? Units है simply mho या ohm inverse. Very convenient, right? Ohm का उल्टा हो गया mho. Beautiful. Ohm inverse is equal to mho. ओके, सब मोह माया है, सब मोह है, या ऑल ऑफ दैट। एंड इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है सीमेंस। कूल, सीमेंस इज द सेम कंपनी, ब्यूटीफुल कंपनी, रियली ग्रेट। इफ यू गोना गेट इनटू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर। इवन मैनेजमेंट ट्रेनीज फ्रॉम ISB get into Siemens, and I am Ahmedabad, I am Bangalore, they get into Siemens and Tatas and all of that. Anyway, what are the factors that affect conductance and resistance? पहली बात, solute और solute के interaction, मतलब कि greater the force of attraction, greater will be the resistance. मतलब देखो, if there are two solute particles that really like each other, then they're not going to move very easily. If they're not going to move easily, then current नहीं होगा. What is current? Current is flow of charges, moving of charges. If there's anything that is impeding the movement of charges, sorry, big words. What I mean to say is कि if there's anything जो रोक रहा है flow को, that will lead to an increase in resistance. तो एक आइडिया आ गया कि अच्छा, अगर ज्यादा फोर्स मतलब ज्यादा चार्ज है तो फ्लो इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, विच इज वेरी वियर्ड। कि अगर ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा करंट होना चाहिए, श्योर, बट अगर ज्यादा ऑपोजिट चार्ज है तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल नॉट मूव। एक्सक्यूज मी, ठीक है। दूसरा आइडिया, सोल्यूट सॉल्वेंट, अगर हाइड्रेशन ज्यादा है, हाइड्रेशन मतलब बड़ा बिग आयन, इफ द आयन इज बिग यू आर गोना मूव अराउंड, सो सॉल्वेशन अगर ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा होगा, साइज कम हो जाएगा, ठीक है। दैट्स नॉट गुड ईदर, राइट। सॉल्वेशन ज्यादा तो जो है प्रॉब्लम ज्यादा। लुक एट Li+, hydrated has the largest size, this is the smallest size, resistance of LiCl is lot larger than resistance of CaCl. The reason I'm doing so much theory is because if you check PYQs, you will get questions like which of these 4 options is, out of these 4 options कितने सही हैं। और आप बैठ के पढ़ो 4 थ्योरी वाले, लाइक अरे यार ये थ्योरी तो मैंने स्किप कर दी थी, एनसीईआरटी में पढ़ी नहीं थी। That's why I'm doing it for you. If you read NCERT, that's the best. ठीक है। Lastly, last factor is viscosity, which is solvent-solvent interaction. Second last factor is viscosity. अगर viscosity ज्यादा हुई तो greater resistance होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट स्वेयर इट, ये है लास्ट पॉइंट। ये सवाल था साइमन no, Simon is here to stay. So this question is in Aakash module also. Sure. Is conductance versa of R? Yes, exactly. R, 1 by R is equal to G, which is conductance. Absolutely right.
Camera out of focus. I hope it's fine now. It's fine now. Yeah. Theory ज़्यादा हो गई. You're right, human. Theory ज़्यादा हो गई, which makes life easier, isn't it? Camera भी out of focus. I'll fix it. Don't worry. Oh yeah, it's quite out of focus, huh? Deactivate and activate. Here you go. This should be in focus now. Yeah, it's fine. It's fine. It should be focused now. शंकर, क्या भाई शंकर? सवाल क्या दे रहा है चैट में? पढ़ ले थोड़ा थियरी. सवाल करेंगे. Don't worry. Let the initial EMF be E naught. सही है. सवाल के साथ पूरा सवाल भी लिखा था. सवाल लिखा है. Ping me on I teach Chem, dude, if you want to talk about questions and answers. Not here. ठीक है? अभी let's focus on what we are doing right now. So last point again next session में होगा on Tuesday. By the way, इस Sunday को we're going to do electrochemistry के PYQs. Okay, check it out. Sunday at I think 6:30 p.m. Since आज Friday मैं बार-बार बोल रहा हूँ, कल नहीं होगा सेशन होगा Sunday को on at 6:30. I need one off day यार, इसीलिए. कंडक्टिविटी की बात करते हैं आज. कंडक्टिविटी क्या है? 1 by resistivity. मैं बार-बार बोल रहा था. What was resistivity? It was also specific resistance. So what is conductivity? Specific conductance. Specific conductance. एक और चीज बोलना चाहता हूं. There is nothing called specific conductivity. ये नहीं है. This doesn't exist. काफी बार बोर्ड में लोग लिख देते हैं और ये लिखोगे आप तो यार आपके बोर्ड वाले लोग उसको मार्क्स काट देंगे. This does not exist. Okay? तो specific conductance या फिर conductivity. ठीक है? Okay? So same चीज वहां पे करो. R was rho L by A. Now I will put G to be equal to K kappa. ये K नहीं है, ये kappa है. ठीक है? Kappa. K-A-P-P-A. This is that Greek letter. ठीक है? Times A by L. This is basically kappa by G. Okay? So kappa is going to be equal to G into G star. That's all. ठीक है? Cool. Let me quickly. All right. Good to know, Balwan. Good to know, Balwan. Did I miss any theory? No. Theory is good. Yes, exactly, Nidhi. Perfect. Great, sir. Sunday मेरा वीक का रिविजन डेट 2 आवर मैक्स रखने का पीवाई की सेशन. नहीं 2 घंटे नहीं, हम लोग 1 घंटे काम करते हैं. क्वालिटी, क्वांटिटी ज्यादा क्वालिटी. 1 घंटे सेशन करेंगे, प्यार से करेंगे. इसलिए 2 पार्ट्स में कर रहा हूं मैं. पहला पार्ट इज गोइंग टू बी ऑन नर्स इक्वेशन इलेक्ट्रोलिसिस. नेक्स्ट पार्ट विल बी नेक्स्ट संडे एंड वी विल डू क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि इसका एक सेशन और बाकी है, राइट, व्हिच विल डू ऑन ट्यूसडे. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी? Siemens per centimeter, also known as mho. Maya per centimeter. I don't know why I keep doing that. Such sad PJs. Khair, yeah, mho or Siemens per centimeter. ठीक है? Cool. Or Siemens per meter. Same way, you can convert this to this. Now notice कि obviously यहाँ पे उल्टा हो गया because you've got the unit of per centimeter, right? So per centimeter, let me write that down. 1 Siemens per centimeter. मतलब कि अच्छा मुझे निकालना है, कन्वर्ट करना है तो मीटर में. तो I'll put cm over here and meter over here. ये 100 है, right? 100 centimeter is 1 meter. This is how I do unit conversion. Okay? तो cm हो गया cancel. अच्छा, तो हो गया 100 Siemens per meter, which is the same as this. Get used to doing it like this. आसानी से आराम से करो, कोई चक्कर नहीं है. शंकर भाई साहब, सवाल आप पूछेगा हमसे I teach Chem पर. If it is related to the content I'm teaching right now, please ask. अगर कुछ समझ में नहीं आया तो please ask. अगर generic चीज पूछनी है, ping me on Telegram or Discord over here. Vijay, what's up? Long time. Yes, Lavanya. Oh, Lavanya's name is Labhansh Sakhre. Oh my God, dude. Lavanya has been calling Lavanya for like since forever. Labhansh. Okay. This is like revealed. Cool. 1 question is equivalent to 10 questions. Wow, Yuvraj. Giving so much positive feedback. Yeah. मेरा focus is to teach you how to do things more than just do 100 questions, right? वो तो आप लोग खुद कर लो. I'm sure you're trying very hard to do a lot of things. My focus is to tell you many ways to solve one question, which will help you crack your JEE dream. So conductivity is simply kappa G L by A and you get G into L square by V. This is very interesting. Look at this. हमने भी क्या किया है? एक बार देखो. Okay, this is very, very interesting. On dilution क्या होता है kappa को? Effect on kappa. That's what we're doing. So this is G into L by A. L was a distance between electrodes, right? A is the area of cross section. अगर मैं दोनों जगह L से multiply करूं, then I get this. Okay. So it looks like if I take L to be equal to 1 and V to be equal to 1, then kappa is equal to conductance, right? Same thing. But look at this. अगर मैं L constant रखूं, if I keep the electrode distance same, say look at this. अगर मैं ये करूं, right? And suddenly I pour water. What happens?
कापा की वैल्यू गिर जाती है, मतलब कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। रिमेंबर, आई एम नॉट सेइंग कि कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस बदल रहा है, कंडक्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी ही बदल रही है। डू यू सी दैट? डू यू सी दैट? दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज आयोनिक सॉल्यूशंस एंड मेटल्स। ठीक है, वहां पे बदलता है रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस, यहां रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी ही बदल रही है। इज दैट ओके गाइस? Oh, Labhansh, now I remember. Your sister Lavanya is preparing for NEET and Labhansh, you are preparing for JEE. अब मुझे याद आया। सही है, yes, yes, I get it. Oh, yes, Vijay Rathod Dhanushka, yes, also that. It's all right, it's all right. All right, Human, time pass mat kar yaar. Then decrease the kappa value. Yes, yes, Nidhi, absolutely right. Nidhi, getting us back to the point. kappa की वैल्यू कम होती है अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो। ओके, पानी ऐड कर दिया तो, डाइल्यूशन कर दिया तो। खैर, conductivity is a conductance of unit volume of solution filled between two parallel electrodes at unit distance. A bit of a definition for you. Now, थोड़ा सवाल कर दिया. How much time? We have around 20 more minutes. Let's solve some questions. Let us solve some questions. There is a bit of theory, but I feel कि आप लोग कर लोगे figure out. चलो कर ही लेते थोड़ा सा theory. What is the theory? Conductance is an extensive property. Extensive मतलब कि I cannot point over here and say कि इस चीज का कंडक्टेंस क्या होगा, बट आई कैन पॉइंट ऐसे कि इस चीज का कंडक्टिविटी क्या है। ओके, इंटेंसिव मींस एट अ पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट इन स्पेस, it is intense, like you can find out its intensity, you can find out what it values. And extensive means you can't. Another way to look at intensity and extensive property is if it changes when I change the mass of something, then it is extensive. If it does not change when I change the mass, then it's intensive. दो तरीके हैं to look at the same thing. पहला तरीका is more scientific, the second तरीका is what we teach in school. ठीक है, तो दोनों वही सेम चीज मिलती है. कंडक्टेंस इज एक्सटेंसिव, मतलब कि अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी डालूं तो कंडक्टेंस होगा, कंडक्टिविटी इज इंटेंसिव, श्योर. बट ह्यूज वन दैट ऑन डाइल्यूशन बोथ चेंज. ठीक है, ये बढ़ जाता है, ये कम हो जाता है, इस पे सवाल आते रहते हैं. ठीक है, kappa is proportional to number of ions per unit volume. Number of ions per unit volume. ठीक है, all right, and hence it is dependent on concentration. Again, we will do this when we do Kohlrausch and all of that. Next session. When is this next session? It's on Tuesday, most likely at 11:30 a.m. That's the time I'm going for. We'll see. Nernst, sir, but main formulas are still left, like Nernst equation. अरे बलवान को कोई बताओ, ये तो सेशन 6 चल रहा है यार. बलवान, फीलिंग्स को हर्ट कर दे यार तुमने. सेशन 2 और 3 में कितनी किए हम लोग. नर्स्ट इक्वेशन बहुत प्यार से किए हैं यार. रुको, तुमको अभी देते हैं इसका. अरे इसके डिस्क्रिप्शन में ही है यार, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है नर्स्ट इक्वेशन. लुक केयरफुली. होल्ड. Now there's me shouting at Balwan again. Balwan, I did not mean to shout at you. रुको. Here you go, bro. Balwan, just for you. ये लो. That's the link, dude, of all of that you're looking for. Yeah, there are a lot of random things that opened. Khair, let's get back to this. Yes, Yuvraj is saying something very interesting. अगर दो extensive properties का ratio लो तो intensive बनेगी. Yes. Okay, sweet. Alsi Akshu. Is this different from Akshu? Another Akshu was there before, was not that Alsi? Anyway, conductivity कर सकते हो additive when L by A is same. इसका क्या मतलब हुआ? अगर cell constant है, मतलब कि अगर सेम लेंथ है बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट्स, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, देन जो है कापा इज एडिटिव. ओ, इसका क्या मतलब हुआ? अगर कापा इज एडिटिव, कापा क्या था? वाज प्रोपोर्शनल टू 1 by r. एंड इफ यू आर एडिंग 1 by r plus 1 by r plus 1 by r, you know what this means? This means that the system is in parallel, which means voltage is the same. है ना? छोटी सी एक्स्ट्रा थ्योरी. चलो लास्ट वाला थ्योरी, इसके बाद में वो सवाल करेंगे. 3-4 सवाल करते हैं. हे अर्पिता, यार तुम लोग, तुम्हारे नाम और तुम्हारे यहां पे नाम अलग हर समय ऐसे होते हैं, और आई वांट टू मेक इट इंक्लूसिव एंड टेक योर नेम्स, बट इट्स कूल. थैंक यू अर्पिता. आई विल नाउ ट्राई एंड कॉल यू अर्पिता, नॉट शंकर. ओह माय गॉड, दिस फनी. ऑलराइट, ठीक है. वेलकम बलवन. व्हाट आर वी डूइंग हियर? सर, आर यू ओवर और विल इट कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम? हम लोग सेशन कंप्लीट करेंगे 9:30 तक ना. वी स्टार्टेड एट 8:30, राइट निधि? सो वील गो ऑन टिल 9:30. वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस नाउ.
सवाल किया जाए, conductance with units Siemens, S is directly proportional to the area of electrolyte plates and the concentration of solution in the cell and inversely proportional blah 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 blah. What is the unit of constant of proportionality? आई लगता है पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा. With unit Siemens, पूरा सवाल पढ़ना ही पड़ेगा. Directly proportional to the area, concentration, okay. Inversely proportional to separation, मतलब proportional to 1 by L. अब निकालना units of proportionality constant और 4 options दिए हैं. What do you think? I don't know who that is, Wu Shang Clan. I have no idea who that is. Balwan is retracting and Arpita is also retracting. Nidhi, what happened? Do you guys have a fight or something? Why is everyone retracting the messages? What's up, Ashutosh? कैसे हो? Can you solve this question, guys? आसान सा सवाल है. Bro, I don't know who that is. And time pass मत कर, सवाल solve कर, वुशैंग तब हम बात करेंगे. We can do as much time pass you want if you're solving the question. अगर question solve नहीं करे, time pass will not be tolerated. Arman and Sai are both saying C. I don't know why I put a slash there. Both of you are saying C. All right. Anushka also is saying C. All right. Nidhi is also saying C. हाँ यार वुशैंग लास्ट टाइम देखो बोल रहा हूँ तो टाइम पास करेगा देखो put your time out. Of course it's good for JEE main advance, bro. Why do you think I'm teaching otherwise? Human, Ashutosh, yes, Labhansh, absolutely right. C is the right answer. But how do you guys get to C? I actually don't know C है कि नहीं सही है. देखेंगे सही है कि नहीं है. देखो G, which is conductance, is proportional to A, C, and 1 by D or L. ले लो जो भी ले लो. What is the unit of L? What is C? C is basically mole per liter. Now units and dimensions में L is basically length, right? ML, T minus 2, etc. I'm talking about that L. Okay. So उस point of view से G is going to be L square because of area times mole per liter, not per liter, per L cube. L is basically length, and 1 by D is again going to be L. So, and this is the proportionality constant. Proportionality constant. Okay, cool. Yeah, that's it. That's literally all you've got to do. So these are units of this. So K will have the unit of Siemens, liter square, not liter, again length. मैं लिखा है L यहाँ पे length, but I keep saying liter. Length per mole, and that's Siemens meter square per mole. That's the answer. Good job, everybody. It's all right, Wushang. Please solve questions. I'll be indebted to you if you solve this. Nidhi, 5 meter square. Yeah, Siemens, absolutely. Stream delay है क्या? I guess there's a 10-second lag between what I say and what you guys see. Yeah, physics and chemistry. Yes, Yuvraj, exactly. इसलिए मुझे बहुत आसान लगता है because it's literally 10th grade physics, right? बहुत simple है, बहुत chill है. चलो और थोड़ी physics कर लेते हैं. A resistance of 50 ohm is registered when 2 electrodes are suspended into a beaker containing a dilute solution of a strong electrolyte, such that exactly half of them are submerged in solution. Adha submerged. If the solution is diluted by adding pure water, volume of the solution gets doubled so as to completely submerge the electrodes. The new resistance offered by the solution will be what? कैसे करें? New resistance क्या होगा? I've got R equal to rho L by A. इनमें से क्या क्या बदल रहा है? R, I'll write this as 1 by kappa. So what changes? Does kappa change? Does L change? Does A change? You figure out of these three things क्या क्या बदलता है. Let me know in the chat क्या क्या बदलता है. 1, 2 या 3. इतना बताओ मुझे chat में. Step by step करते हैं. Out of 1, 2 or 3, what is changing? Can you tell me? Yes, absolutely right, Lavash. Nidhi retract कर दिया. 50 maybe. Anushka saying 50. Arman is also saying 50. Nidhi also saying 50. I'm great. Harminder, आप कैसे हैं? Sure, Wushang, we will do kinetics. I'll tell you what date. कुंडली जैसे निकालते हैं ना, इस तिथि पे ये होगा, वही तिथि हम लोग निकालेंगे. रुको, मैंने कहीं तो डाला था. This is the wrong telegram. बताता हूँ यार, थोड़ी देर में बताता हूँ. तुम लोग सॉल्व करो इसको. एरिया एंड कापा, युवराज, थैंक यू फॉर दोज इनपुट्स. Human is saying 50. Everybody else here is also saying 50. Good stuff, good stuff. You guys are on that Telegram thing ना, where मैंने वहां पे एक डाला था, क्या बोलते हैं इसको, like a schedule that I'm going to follow. तो उसमें कहाँ था,
Dude, it's hard to find that, huh? Where did it go? I thought I sent it recently. Ah, here you go. JEE session plan. JEE session plan में था kinetics is on 9th of December. That's the plan. Khair. 1 and 2. Good evening, Yash. Let me go back to the PPT. कहाँ गया PPT? PPT भाई साहब खुलिए खुल जा सिम. Okay. 1 and 2 are going to change and not 3. I feel 2 and 3 are going to change. 1 is not going to change. L is the length between the electrodes. वो नहीं बदल रहा है. Area बदल जाएगा. Area in fact double हो जाएगा. Right? Volume भी double हो जाएगा. Right? So 2 and 3. Okay. K is number of ions per volume. So volume is becoming twice. So K dash is going to be half of K, which means ki resistivity dash is going to be 2 times resistivity, right? And area is also becoming twice. So R remains the same, cancel ho jata hai, which is same as this. So 50 hi rahega. Okay? Is that okay? 3 change honge. Yes, 2 and 3 will change, 1 will not change, right? If you want me to draw the diagram, I can quickly draw a rough diagram here and show you. This is your electrodes, right? And this is say initial and say this is final. Okay. So you see the area is sort of doubled, right? If this is A, this is A, this is A, this is A, right? The length is the same and kappa will change because volume changes, right? This whole thing is V. Let me shade it with some other color. ये पूरा है V और ये वाला भी है V. Right? So volume double हो रहा है. And remember I showed you with that thing कि kappa is proportional to L square by V. Kappa हो रहा है कम. Okay? Absolutely right. Good stuff. Good stuff. Okay. Okay. No, Nidhi, you're amazing and very humble. It's amazing that you participate in these classes and I'm thankful to you for doing that. Anything you do उसके ऊपर is extra, which is awesome. K half होगा, A double रहेगा, R सही है. Have you seen this question before क्या? अगर नहीं देखा तो बहुत अच्छी बात है. All of you did brilliant. एक और सवाल इसी आइडिया पे. The resistance of a solution A is 50 ohms and that of solution B is 100 ohms. Both solutions being taken in the same conductivity cell. If equal volumes of solution A and B are mixed, what will be the resistance of the mixture using the same cell? Last line, next try. 50 ohms, 100 ohms. Same conductivity cell, equal volumes. यहाँ पे भी same हो रहा है देखो. V dash is 2V. Remember that when you mix this. What is the resistance of the final mixture using the same cell? किया हुआ है? अच्छा युवराज. Good, good. अच्छा है किया हुआ है. Yes, Vushan. I am aware. Thank you. इसको try करो. वो वाला भी किया हुआ है. अच्छा आकाश में हो क्या तुम लोग? Some of these questions may be familiar if you have taken Aakash Digital. Then yes, because we are Aakash, right? Byju's, Aakash, Byju's. Nidhi, Fast and the Furious. अरमान भी जल्दी से आंसर बताते हुए. How do you guys solve it? Same idea, right? R is rho L by A. Rho को लिखो as 1 by kappa. You will see बार बार मैं सेम फॉर्मूला लिखता हूं 1000 बार ताकि आप लोग टेस्ट में इसको 2 सेकंड में कर सको. 2 नहीं ठीक है 10 सेकंड 20 सेकंड में कर सको. But while you're practicing, write this 100 times. Keep writing, keep writing, keep writing. It's okay. Remember we said that kappa was additive. ये आइडिया यूज कर सकते हो, कोई भी आइडिया यूज कर सकते हो, right? So kappa A of kappa B is equal to kappa C. Now the interesting thing is this guy here, right? I can't just add these two. ये सही है to an extent, but check this out, right? Since the volume is doubled, Kc will be equal to Ka kappa A plus kappa B by 2. तो इसके बजाय I'll have to change this a little bit, right? I'll have to change this so to make this 2 by Rc. So what actually makes sense is this expression right here. ठीक है? This is why I can't just add them because here this value is going to be equal to यहाँ पे 2 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है? Do you see that? Is that okay? R owl A. Yeah, it looks like R owl or like a roll. You're not from Aakash? All right, great. Good, you've solved this in. Excellent. Yeah, 66.67. You're great at this. Physics ही कर रहे हैं हम लोग. एक और सवाल देखते हैं. Last के couple of questions, I think. Yeah, last couple of questions. I think ये last सवाल है. Let's see. Resistance of a 0.1 molar KCl solution in a conductance cell is 300 ohm and conductivity is this value. What is the value of cell constant? बहुत ज्यादा आसान सवाल हो गया क्या?
ट्राई करो. What do you think? Is this really easy? I think it's pretty fairly straightforward. Try करके देखिए इसको. There is a distractor in this question. इसमें एक extra information that you just do not need to solve this question. Nidhi is saying R is 1. 1 by 100, so R is 1. Physics and chemistry. Hey, Ayush Prasad. Bro, this is way past your bedtime. Weekend party, huh? सही है, सही है. Human, क्योंकि organic आता नहीं है यार. There are such better organic teachers here in the company. They are teaching you. I am physical chemistry, bro. Maths और chemistry, हमको बस यही आता है. Inorganic गिर पढ़ के सीख गए. But primarily physical ही आता है मुझे. Organic मतलब ठीक है, I know a little bit, but they are much better teachers here. They are teaching you already. All right. Nidhi, Arman are all saying A. Okay. Yuvraj and Human. And Labhansh. I hope I got the name right this time. Labhansh. सही है. सिंपल सा सवाल था. A आंसर है. देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं. R is rho L by A as before. और मैं L by A को सीधे लिख रहा हूं भाई G star, बिकॉज मुझे दिया हुआ है G star और कापा भी दिया हुआ है. नहीं, कापा नहीं दिया. हाँ, कापा भी दिया हुआ है. तो मुझे निकालना क्या है? नहीं, G star ही निकालना है. कापा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, राइट? रेजिस्टेंस दिया हुआ है. So I don't need 0.1 molar KCl. जाए, उसको गोली मारो. You don't need 0.1 molar KCl. You don't need that right now. So simple, straightforward form. And ये, I'm not kidding. This has come in JEE main. Okay, these kind of questions have come in JEE main and in NEET. क्या? देखो, G star is simply kappa into R. या फिर G into G star is equal to kappa. Same चीज है. If I can also say G into G star is equal to kappa. डरो मत. Same ही equation है. ठीक है? So 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स. फिर से लिख देता हूं यहां पे. कूल. हुमन, तुम टाइम पास करोगे तो गुस्सा तो होंगे. आई एम वर्ried फ्यू पीपल जिसको गुस्सा नहीं आता है, अनलेस यू गाइस डू सम रियली रैंडम स्टफ. इफ यू बुली ईच अदर, दैट्स व्हेन मुझे गुस्सा आएगा. आई डोंट थिंक आई विल गेट एंग्री, बट आई विल शाउट एट यू फॉर श्योर. अरे यार, बी वेल बिहेव. नो, गुस्सा क्यों करेंगे? Right? Exactly, Ayush. It is that. Yuvraj. Hey, Nityashri, good to see you here. Any doubts? We are good, right? Shriya? All right. Joining in the last moment. 3.9 centimeter inverse. डर के आगे जीत है human. All right. I'm done for the day. Here's that bright orange screen, which means we've got a couple of homework questions. Here you go. पहला homework question. The electrical resistance of blah, 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 blah. कुछ है. बहुत प्यारी चीजें. आसान सा सवाल है. ये वाले homework questions आसान है. लास्ट सेशन वाले थोड़े मुश्किल थे, ये वाले डायरेक्ट है. इनफैक्ट सारे सवाल फ्रॉम दिस आयोनिक वाला पार्ट आर क्वाइट डायरेक्ट, इवन इन JEE एडवांस्ड. आई विल टेल यू, आई विल शो यू, राइट? अगले हफ्ते वो दिखाएंगे. इस वीकेंड, व्हिच इज ऑन संडे, वी आर गोइंग टू मीट एट आई थिंक 6:30 PM एंड वी आर गोइंग टू डू इलेक्ट्रो के PYQs. व्हाट PYQs? Nernst, electrolysis, basically everything except ionic wala part, ionic conductance, etc. Right? That is what we'll push for next week. एक घंटे में we will do all of these. ठीक है? चलो, have a brilliant weekend, everybody. Let me read something. हिंदी में लिखा है अपने. हिंदी में पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है. अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि तुम्हें पाना एक दिन लोगों का सपना बन जाए. वाह निधि, अब तो शायर निकले. लवली. ह्यूमन ब्रो, तो गूगल कर लो ना, उसमें क्या है? छोटी छोटी चीजें गूगल कर लो. यस आयुष, एब्सोल्युटली, दैट्स द आंसर. 3.9 centimeter inverse. Yes, easy, right? Easy, Jay is easy. Arman, great man, great. Thank you so much everybody for joining, and I'll see you. एक मिनट, मैंने बंद तो नहीं कर दिया, चल रहा है. हाँ ठीक है, चल रहा है. I'll see you on Sunday. Okay, I'll send you notes as always right away. And if you guys want to chat, I'm on I Teach Chem on Telegram and Discord. मिलते हैं फिर संडे को. All right. Oh, if you guys are wondering कि भाई कब हम लोग शुरू कर रहे हैं revision sessions, so revision sessions will start on 30th of November, and we are going to start with stoichiometry as usual. We'll do stoichiometry, atomic structure, then we'll do solutions, kinetics. We'll alternate between 11th and 12th. Nobody will feel left out. I know some of you are from 11th grade
एंड आप बोल रहे यार आपके लिए कहाँ है चीजें, सब 12th का सवाल कर रहे हो. डोंट वरी, आई हैव डन अ लॉट ऑफ 11th ग्रेड PYQs बिफोर. आई विल कंटिन्यू टू डू बोथ 11th एंड 12th ग्रेड सेशंस, ताकि आप दोनों को बेनिफिट हो, जो स्टूडेंट्स अभी देने वाले हैं जेई और जो स्टूडेंट्स बाद में भी देंगे अगले साल 25 में. खैर, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी. और क्या था, एक और चीज बोली थी, I forgot. Yeah. Oh yeah. Like the video, etc. Chalo. All right. Bye. I'll see you on Sunday. Yeah. Good night, everybody. Bye. Thank you. Thank you so much. टीवी कम देखो, मुझे भी बोल रहे हो. I feel like that was a personal attack because मैं भी बहुत ज्यादा टीवी देखता हूँ. खैर, good night. Bye. See you around Sunday को.